सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का जैसा आप जानते हो हमारा जो सेशन है उसमें वी आर इंटरेक्टिंग विद ऑल इंडिया रैंक 44 सक्षम अग्रवाल। आज के इस वीडियो में हम लोग उनकी सारी की सारी जो स्ट्रेटजीज थी, व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन हिज प्लान ऑफ एक्शन, उस वो सारी चीजें डिकोड करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सक्षम फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स अ प्रिविलेज टू बेसिकली आज का जो हमारा इस चैनल के ऊपर आप आए हो इतना टाइम निकाल के। सो थैंक यू सो मच। ये चैनल के ऊपर सारे सारे बच्चे, मेजोरिटी बच्चे सीए इंटर के ही हैं। सो आई एम श्योर कि सीए इंटर आपने अभी लेटेस्ट क्रैक किया है नवंबर 22 में। सो हेंस आपकी जो स्ट्रैटेजीज रहेंगी, आपकी जो गाइडेंस रहेगा, सारे के सारे बच्चों को बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सक्षम, सो बिफोर बिफोर वी बिगिन, ओके, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि what was your feeling when you came to know that you have scored an all India rank 44? जैसे मैं हमेशा से रैंकर्स के बारे में हमेशा मैं यही बताता हूँ कि जैसे आई ऑलवेज रिमेम्बर 2011 वर्ल्ड कप, जब जब वो टाइम पे फॉर दैट टाइम पीरियड आवर क्रिकेट प्लेयर्स वर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. So similarly, Saksham, when the result was announced, okay, at that moment you were in the top 50 brains in the country. सो वो फीलिंग कैसी थी, मुझे सबसे पहले ये जानना है सक्षम, उस दिन क्या फील हुआ? आई रिमेम्बर यू वर ऑन अ ट्रैक दैट डे, वी वर नॉट एबल टू कांटेक्ट यू, मॉम कॉल कर रही थी, सब लोग ट्राई कर रहे थे लेकिन फोन नहीं लग रहा था. सो क्या चल रहा था दिमाग में, वो सब जानना चाहते हैं मेरे ऑडियंस. All right. Thank you very much, sir, for giving me the opportunity to come on your channel and speak to you, first of all. So, definitely, you are going to be happy, you're going to be joyous, right? लेकिन the first 2 minutes जब आप अपना रिजल्ट देखते हो, right? और आपको पता चलता है कि आप रैंकर हो, right? Those 2 minutes, you don't know how to react. Those 2 minutes are just your heart bubbling and, bursting out, right? All your emotions in the body are coming out, right? You're happy, you want to cry, you just want to scream your lungs out. Because for those 2 minutes, you're happier than the richest man on this planet. You're probably happier than AIR1 also. Okay. Right, right. So for those 2 minutes, you feel like life is worth living and all your sacrifices do mean something, right? So, I mean, you rightly know, but मुझे पता चला मैं रैंकर हूँ at 3 p.m. because I was on a trek at 12,000 feet with no internet, right? और So for me, when I रिजल्ट 10 बजे अनाउंस हो गया था, रिजल्ट सुबह अनाउंस हो गया था. रिजल्ट 10 बजे अनाउंस हो गया था, तो या पूरी दुनिया को पता था कि मैं रैंकर हूँ before I got to know I was a ranker. So, ओके, ओके. but definitely those first 2 minutes that you see that you have a all India rank, right? Your mind and heart are not ready to believe that out of 2,20,000 kids who appeared for the same examination, you were part of the top 50, right? या In terms of percentile, it's literally 100 percentile, या right? So I think those 2 minutes are the most precious moments of your life. And as I've said before, जब ICI आपकी felicitation करता है, and there will be an announcement made that rankers, please come out of the line. आपके लिए seats front row पे reserved हैं, right? And then they'll call out your name, All India rank 44 Saksham Agrawal, right? या And you have your parents and a room full of CAs clapping for you. I think those are the moments you live for. Those are the moments we enter this journey. So live for that and work for that. वेरी वेल सेड सक्षम. आई बिलीव दैट कि ये जो, आई ऑल्सो बिलीव द सेम थिंग दैट कि ये जो मोमेंट्स है, इन मोमेंट्स के लिए ही जीना चाहिए. एंड डेफिनेटली ये बहुत बहुत ही ज्यादा चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं हमारे लाइफ के, जो एक बहुत अच्छा डायरेक्शन देते हैं लाइफ को. सो गाइज, एक इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट लुक अप फॉर दीज मोमेंट्स. मैं इतने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, मैंने इतनी बार जब क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, मैंने पूछा है कि क्लास में कितने लोगों को लग रहा है रैंक आएगी. बहुत सारे बच्चे हंस देते हैं, उनको बिलीव ही नहीं होता है कि जहाँ पे आज वो लोग रैंक ला सकते हैं. सो द पॉइंट इज दैट यू फर्स्ट हैव टू बिलीव, एंड इन ऑर्डर टू बिलीव यू हैव टू ड्रीम फॉर इट. जब तक आप ड्रीम ही नहीं करोगे तब तक वो चीज अचीव नहीं होने वाली है. दैट्स क्लियर. सो देयरफॉर सक्षम, थैंक यू सो मच फॉर दिस. सेकंड सेकंड मुझे इंपॉर्टेंट जानना था सक्षम, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने अगर 10th स्टैंडर्ड में 90% स्कोर किया है, 12th स्टैंडर्ड में हम लोग 90% स्कोर कर रहे हैं, तो ही मुझे रैंक आ सकती है.
आई वॉन्ट यू टू टेल मी, क्या ये सच है? वर यू ऑल्सो अ रैंकर ऑल थ्रू आउट योर स्कूल? मतलब अकेडमिकली यू आर स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज द रीजन वाई यू गॉट अ रैंक? कि व्हाट वाज इट, व्हाट वाज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट? मैं वो जानना चाहता हूँ। तो सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, इंटर सीए में आपको रैंक चाहिए, राइट? या आपको अंडरस्टैंड, इंटर सीए का पहला मोटिव है पास होना, ओके? रैंक इज डेफिनेटली लाइक अ चेरी ऑन टॉप, ठीक है? कोई भी इंटर सीए के डे वन पे ये नहीं बोलता मुझे रैंक चाहिए, वी से हमें पास होना है, राइट? नाउ एवरीथिंग, योर रिजल्ट, योर लाइफ अहेड, राइट, डिपेंड्स ऑन 9 months बिफोर इंटर सीए। आपकी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर, आप मेरे को जानते हो, आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस किड्स ऑफ माई स्कूल, राइट? मतलब टीचर्स दुखी थी मेरे से, क्लास के बाहर खड़ा था, पेपर में मतलब टाइम पास करता था, स्कूल लाइफ एंजॉय करता था, ओके? आई वॉज नॉट द पर्सन एनी वन लुक्ड एट, he will be an all India ranker ever in his life. Okay. I was a, average or a below average student, right? But things changed the moment I realized my potential, right? The moment I realized I have the power to do something that everyone possesses, right? और ये कब And the पता चला? 9 months, कब पता चला ये व्हेन डिड यू रियलाइज दैट पोटेंशियल? कब मालूम पड़ा कि आपकी पोटेंशियल है? so I'll tell you, I'm from Bombay Scottish School, Mahim, right? At least जो Bombay के kids होंगे, they will have a very good idea how tough Yeah. the school examinations are, okay? Yeah. So being the naughty kid, being, the kid who's always outside class, no one expected me to come up scoring highest in the mathematics prelim paper, right? Oh. And that's not what kicked me, right? What kicked me was when I saw three toppers of our standard lose their minds on seeing me standing first. Oh. Because that's when I realized कि Saksham, you can do something even they can't, right? Yeah. You can do something they couldn't imagine. So when you realize how much you can go ahead, what hard work can do, right? The power of hard work and persistence, is unmatched, right? So ऐसा कहते हैं, कि काम तो गधा भी करता है, right? But you have to understand there's no substitute for hard work, right? 9 months of working hard got me an All India rank 44, right? Everywhere I go now, people look up to me with a different eye, right? Yeah. So I think it's only 9 months of hard work and sacrifice, and nothing before that counts. After that you said, your friends were standing and वो देख रहे थे, and you felt good that कि जहाँ पे चलो I was able to beat them, okay, and they felt that कि you would never have been able to do it. मुझे वो थ्री इडियट्स का वो सीन याद आ रहा है, पता है, जहाँ पे जहाँ पे रैंचो स्कोर्स द नंबर वन एंड देन, Right. पता है वो ऐसा कि बुरा तब लगता है जब बेसिकली दोस्त फेल ना हो जाए, बुरा तब लगता है जब बेसिकली दोस्त फर्स्ट आ जाए। वैसे तो आई एम श्योर दैट तेरे जो तीन दोस्त थे, that definitely would have felt the same thing, कि बुरा तब लगता है जब दोस्त नंबर वन ना आ जाए, वैसे केस में इन द मैथ्स प्रीलिम। So fantastic. I think so you're living the three idiots journey completely. And I think so the same thing as you said that about in order to be successful you had there is no substitute for hard work. So जितने भी students आज ये channel देख रहे हैं, प्लीज इंश्योर करना कि मतलब मैं कितना कितना कोई मैसेज आते हैं मुझे यार कमेंट्स में, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे इतने क्वेश्चन आते रहते हैं सक्षम, कि सर क्या मैं मेरी पढ़ाई स्टार्ट कर दूं, मेरी आर्टिकलशिप कब स्टार्ट होगी, आईटी ओटी कब होगी, ये कब होगा, वो कब होगा। एंड आई फील दैट ये फिजूल की चीजों में इतना इंटेंगल हो जाते हैं ना स्टूडेंट्स, दैट समवेयर डाउन द लाइन बच्चे भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जो तुम्हें सीए बनाने वाला है वो तुम्हारी पढ़ाई है। सो Right. वो हार्डवर्क करना आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, भले आप डायरेक्ट एंट्री के हो, भले आप फाउंडेशन रूट के हो, एंड करना पड़ेगा आज से, अभी से। यू हैव टू सिट, True. मेक अ प्लान एंड स्टार्ट डूइंग इट। ओके, कैसे प्लान बनाना है उसके वीडियोस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है? बट बहुत सारे, मैंने एक जो सबसे पहला वीडियो भी डाला था कि जहाँ पे हाउ एग्जैक्टली डिड आई स्कोर एन एग्जामिनेशन इन पेपर्स। सो ऐसे बहुत सारे वीडियोस चैनल के ऊपर है, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो आपको ये भी वीडियो आपको आज के वीडियो को भी सेव करके रखना, ताकि आपको बार बार ये देखना है कि आगे जाके जब हम डिस्कस करने वाला हो सक्षम के साथ उसकी स्ट्रेटेजीज, तो उनको सिंपली आपको इम्प्लीमेंट करना है। And as Saksham rightly said, there is no substitute for hard work. So stop running from it. Start doing it right now. Okay. हाँ ठीक है सक्षम, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरा था सक्षम,
was that ki, can you just throw some light on what exactly was your strategy for practical subjects and theory subjects? Okay, ये बच्चों को बहुत डाउट होता है. मेरा ये मानना है कि अगर आपको बेसिकली रैंक स्कोर करनी है तो यू हैव टू फॉलो व्हाट द रैंकर सेज. ओके, व्हाट द रैंकर डिड. ठीक है, आप सिंपली वो कॉपी पेस्ट कर लो स्ट्रेटेजी. आई एम श्योर दैट रैंक शायद आया ना जाए, आप पास तो मिनिमम हो ही जाओगे वैसे. सो इसके लिए सक्षम, आई वांट यू टू गो डीप एंड टेल अस how exactly did you study in those 9 months? Okay, what was your strategy for practical subjects? What was your strategy for theory subjects? Okay. All right. So, see, sir, मतलब कैसे है ना? First thing you have to understand, you have to look at things a little mathematically, right? You have Yeah. 800 marks in terms of the question paper, right? Now, it doesn't matter whether you score marks in your favorite subject or you score marks in the subject you don't like, right? 80, 40, 60, no matter what marks you score, they have equal weightage, ठीक है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप डे वन को अगर इस माइंडसेट के साथ बैठते हो, मैं ये सब्जेक्ट में अच्छा हूँ और इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूँ, राइट? फॉर 9 months यू आर गोइंग टू सिट विद दैट माइंडसेट, एंड द वे योर माइंड थिंक्स, दैट इज हाउ योर रिजल्ट इज गोइंग टू कम आउट, राइट? सो आई वुड से ऑन day one, that's what I did. I categorized our 8 papers in 3 categories, right? Okay. Category A, Category B, Category C. Guys, Okay. please ये नोट डाउन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ. हाँ सक्षम, बोलो. तो कैटेगरी ए वो दो सब्जेक्ट्स जिनको देख के मैं खुश हो जाता था, मैं बोलता था हाँ ये तो मेरे को आज 8 घंटा पढ़ना है, राइट? और ये वो सब्जेक्ट है जिसमें मैं एग्जामिनेशन के नीचे देखूंगा ही नहीं, ठीक है? कैटेगरी बी वो दो सब्जेक्ट्स वेयर आई वाज कॉन्फिडेंट, आई लाइक दीज सब्जेक्ट्स, बट यहाँ मार्क्स नहीं आते, यू नो, आई ऑलवेज लूज आउट ऑन मार्क्स, बट आई डू लाइक स्टडिंग देम, राइट? कैटेगरी सी आर दो सब्जेक्ट्स जो मैं बोलता हूँ हाँ ये मुझे फेल करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हर बच्चा सोच लेता है, ठीक है? नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो कैटेगरी सी है ना, इन सब्जेक्ट्स को अपना रैंकिंग सब्जेक्ट बनाना है. कैटेगरी सी इज द सब्जेक्ट दैट इज गोइंग टू गिव यू द रैंक, एंड दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, राइट? EIS, SM and audit are two subjects you will always find students category C, right? But these are the subjects you have to start working with. These are the subjects you have to give maximum time to so that you can conquer them, right? You have to understand, when you start with C and then B and then A, right? There is a balance between what your heart wants and what your mind wants to do, right? And you have to create that balance, ठीक है? You cannot score 90 in accounts and costing and then come up with a 40 or 45 in audit and EISSM. You're definitely not going for rank, right? And when you play a game like that, you also jeopardize passing in the first attempt, right? Yeah. So the first thing you have to do is categorize these subjects and start working with the subject you are scared of, right? You know, it's very easy to say this, right? I can understand. But that's how I approached EISSM, and that's how I met, Aakash sir, right? I understood category C wala subject is going to take my rank or is going to take my, first attempt pass. So within, I think it was May or June, I reached out to sir and I started with category C. Yeah. I said, the time I have to start pulling the lever, I have to pick up the pace. Let me start with C. Let me see how much effort do I need to make C an A subject. Got it. And specifically for practical subjects, was there a different thing that you did? And what was the highest you scored? Which subject did you score the highest? So in practical highest, I scored costing. That was 96. 96. Oh, okay. तो definitely please ये बताना कि basic कि कैसे, how you were able to score 96. I understand that आपके लिए category A subject था, right, costing. So Right. definitely you loved it. ठीक है, but सक्षम, why exactly students fear costing? मुझे ये जानना है. बच्चों को इतना डर कॉस्टिंग सब्जेक्ट से क्यों लगता है? ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ. आई हैव माई आंसर टुवर्ड्स इट. आई बिलीव दैट कि मेनी टाइम्स पीपल आर नॉट एबल टू थिंक फ्रॉम दैट बिजनेस माइंडसेट. ओके, वो जैसे वो क्विक थिंकिंग होती है ऑफ बिजनेसमैन, ठीक है, वो नहीं होती है. इसके लिए बेसिकली कई बार बच्चे बहुत बहुत मैथमेटिकल चले जाते हैं, सोचने लग जाते हैं ऐसा. वेयर इज आई फील दैट जितना आप उसको सिंप्लीफाई कर दोगे उतना ईजी आता है. व्हाई डू यू फील दैट बच्चों को कॉस्टिंग में डिफिकल्टी आती है? So I'll tell you one major problem, right, with practical subjects, right, which are 4: accounts paper 1, costing paper 3, advanced accounts paper 5, and FM in paper 8,
right? Yeah. So you have to understand, sir, there's obviously, everyone knows material बहुत है. ICI की मॉड्यूल है, MTP है, RTP है, ट्यूशन नोटबुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, and other material, etc., etc. The first thing everyone has to understand is, without conceptual clarity, having tons of material has no value, right? Without you knowing what actually is supposed to happen, right, with an entry or the logical explanation behind it, आप 10 बार सम प्रैक्टिस कर लो, आप एक मैकेनिकल तरीके उसको याद कर लोगे, राइट? बट आप उसकी अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं हासिल कर पाओगे, ओके? एंड व्हाट हैपेंस इज कि पीपल, because they think it's a practical subject, let's sit and do. But a practical subject is equally theoretical, right? If you do not possess the theoretic knowledge of the subject, आप practical पे नहीं जा सकते. And this is the biggest mistake I have seen my friends also make. They will be like, चलो textbook निकालो, RTP निकालो, let's start solving. अरे बिना सोचे समझे, पहले उसकी theory बिना सोचे समझो भी तो. साहब कंसेप्ट, बिना कंसेप्ट समझे चालू कर देते सम सॉल्व करना. ओके. Exactly. ओके. So, and I'll tell you, practice is important. I'm not denying. For every practical subject, I must have had 6 to 7 long notebooks, right, which have been completely filled with practice, right? There's no denial about that. But before that, definitely time has to be invested in understanding the concept, understanding the law behind it. Got it, understood. So guys, ये एक बहुत प्रिसाइज आंसर सक्षम ने दिया है. एंड एक बात आप समझ लो प्लीज, मैंने इतने साल इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं. आई नो फॉर अ फैक्ट दैट द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें एग्जामिशन स्कोर करना पॉसिबल है और इजी है एज कंपेयर टू थियोरी, राइट? सक्षम, यू वुड आल्सो अग्री टू दैट कि जहां पे बेसिकली आज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अगर आपने बराबर टेक्निक फॉलो की, अगर आप तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, विच इज वेरी वेरी एविडेंट, वेयर सक्षम हैज स्कोर्ड 96. सो आप सब लोग ये समझ लीजिए जो आज ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर आपको एग्रीगेट तो लाना है bare minimum, then in that case you have to ensure that you bank on the practical subjects first. एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को बैंक, उनके ऊपर बैंक करने का मतलब क्या होता है कि जहां पे आज उनको समझो, क्वेश्चन को बस रट रट के मत जाओ, ठीक है? इम्पॉसिबल. एक बार शायद से अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो थियोरी में वो नसीब चल जाएगा कि आप रट के गए हो, क्वेश्चन है आपने लिख दिया. Right. आजकल तो वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ केस स्टडी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है. हाउएवर प्रैक्टिकल में वो टेक्निक नहीं चलने वाली. अगर आपको सेम से अपना आप सेम का सेम सम सॉल्व करके जा रहे हो 10 बार, जरूरी नहीं है कि 11वीं बार करेक्ट चला जाए. जब तक आप उसको समझोगे नहीं, आपको वो क्वेश्चन नहीं आएगा. इज दैट राइट सक्षम? Right. So just one point I want to add. Yes. For towards theory subjects, right? If Yeah. you see the November 22 attempt का paper, you will understand कि it was not theory in the sense कि question आपको पता है और answer vomit करना शुरू कर दो, right? Yeah. In law, especially the tax paper, which was one of the toughest tax papers, at least we have seen, right? Yeah. You have to understand ये paper कब conquer होगा. ये paper तब conquer होगा जब आपने ICI module को इस तरह रीड किया है, इस तरह गो थ्रू किया है कि आप आंख बंद करके टैक्स लॉ सुना पाओ, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन हैज टू डू दिस, राइट? द एम इज कि एटलीस्ट आप 45-50 प्लस क्रॉस करो, राइट? बट इफ यू रीच अ स्टेज विद सो मच ऑफ रीडिंग दैट यू कैन close your eyes and recite tax laws, you are definitely scoring 70 plus. And that's how I scored 71 in taxation, right? One of the toughest tax papers, we have seen. And I had 71, right? Something not even I expected, right? Yeah. But this is how you have to approach theory subjects. You have to look at them like a land to conquer. Got it. वेरी वेल सर सक्षम. एंड आई होप सब बच्चे इन सारे स्ट्रेटेजीज का नोट डाउन कर रहे हैं. गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके लिए. आप जितना इनको इम्प्लीमेंट करने वाले हो उतने आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है? हैविंग सेड दैट सक्षम, आई वांट यू टू थ्रो लाइट ऑन द फैकल्टीज दैट वर देयर इन एवरी सब्जेक्ट. Okay, any specific faculty that you felt that ki, okay, for example accounts I did from this faculty and that actually helped me. Okay, you can tell us the exact names also if you know any particular faculty for accounts जो आपको लगा. I understand that you went to JK Shah, ठीक है? So therefore and you were with me for one particular subject, that is EISSM. So therefore आज I want you to throw light on, because
एट द एंड ऑफ द डे सारे कंसेप्ट क्लैरिटी जो थी आपको मिली थी वो फैकल्टी से मिली थी। ओके, सो कई बच्चों के भी Right. क्वेश्चन होते हैं कि सर हमें कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द वेयर शुड बी ज्वाइन फॉर क्लासेस। तो आई वांट यू टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट कि कहाँ आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली थी। All right. So guys, I'll be very honest, एक चीज समझना, जो आपकी ट्यूशन क्लास होगी ना, वो आपको पास या रैंक नहीं दिलाएगी। ओके, सो आप ट्यूशन क्लास से बस इतना एक्सपेक्ट करो दैट दे पुट यू इन सच अ रिगरस रूटीन that you try and you try that routine imposing it on yourself, right? कि जब आपको लास्ट के 3 से 4 महीने घर बैठना है तो आप 9 से 10 घंटा बैठ सकते हो या नहीं, ठीक है? So as sir said, I was in JK Shah, right? Faculty was definitely very good, but three faculties that who really स्टूड आउट, taught me स्टूड आउट। what depth of a subject is, right? या। कि एक सब्जेक्ट की गहराई कैसे होती है, right? For costing, I had Monil Shah, one of the greatest costing teachers. He would literally go as to how that costing concept was derived, right? ओ, Okay, and I mean 96 speaks for itself. राइट। Okay, in taxation for direct tax, we had a sir, Mr. Chirag Goyal. He himself was ranker at Inter and Final. Okay, ओ, so he knew what depth of a subject meant, या, right? And then for indirect taxes, we had Professor Yogesh Mehta, again a ranker at Inter and Foundation. So what happened is that he definitely knew how deep indirect taxes would go and exactly what would be asked in the paper, या, right? So for group one, these three were faculties who really helped me. And या, coming to group two, I'll start with audit. We had Rahul Mehta with us, so Rahul Mehta. या, The best part about him in audit was that audit is a subject we all hate, right? So he would teach us so exam oriented कि we were like, ठीक है, बस इतना ही करके जाओ. Okay. So I think his notes were very exam oriented and they या, were very precise. In fact, at least 20 to 25 marks of the paper came from what he had given us, ओके, right? And then coming to EISSM, we have Aakash sir here with us, right? Who guided me like a true mentor. Okay. So I'll just touch up upon Aakash sir, the private tuition that I had with him, and EISSM. So in your journey, you will definitely not like EISSM. Okay. Out of 100 kids, there's only one who likes EISSM. ठीक है, राइट, बट ये सब्जेक्ट आपको मार्क्स दे सकता है और ये रियलिटी है, right? या, I have 66 in EISSM. Okay, not my highest score, but definitely one of the good scores. ठीक है. या, Now with Aakash sir, what really happened is that I needed conceptual clarity for EIS definitely, right? I had no idea of what EIS was. ठीक है. So the basic concepts, right, from the very beginning to the very advanced, we even have blockchain in our syllabus. It has nothing to do with CA, but राइट, है, राइट, ठीक है. बट है, So to have the understanding, definitely Akash sir, मतलब 66 मतलब पूरे उनके ले लो, it's like that, ठीक है. Because EISSM में conceptual clarity के बिना कुछ नहीं कर सकते. ये पेपर आप रट्टा मार के जाओ, there is no chance by the next day you will not forget it, right? Because that's how vast the subject is, ठीक या, है. And especially for SM, you have to understand institute is not theoretical. They ask us practical based case studies, right? या, तो unless आप case study को identify नहीं कर सकते, आप उसका logic backward derive नहीं कर सकते, 5 में से you will always score 0. got it. Very well said, Saksham. I mean, thank you so much for those kind words. Definitely, I was there with you, but I have seen your dedication. So, guys, एक बात समझना कि we are simply an enabler. सारे faculties जो है, they are only an enabler for you. Okay, at the end of the day, पिच पे जाके सिक्सर तो आप लोगों को मारनी है. Okay, we can get you till the pitch. Okay, लेकिन पिच पे at the end of the day, you will only have to score that sixer. सो देयरफॉर व्हाट आई बिलीव इज दैट कि जहाँ पे हाँ हमारा एक इन्वॉल्वमेंट रहता है, नो डाउट, बट डेफिनेटली योर हार्ड वर्क, बिकॉज सी इट इज अ टू वे गेम. आज जब मुझे दिखता है कि सामने वाला स्टूडेंट इतना एफर्ट डाल रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं 200% डालने की ट्राई करता हूँ, ताकि ऑटोमेटिकली डेफिनेटली वो मार्क्स एक्सपोनेंशियल हो जाए. ठीक है. So having said that, Saksham, I want you to throw some light on the concept of private tuition. Okay, जो private tuitions होती हैं, ओके, मेजोरिटी बच्चे जो होते हैं दे गो टू 1:many.
okay, in a big coaching class. So definitely that helps. Definitely helps. But can you throw some light on why exactly private tuition? Where I was teaching only one student, that is you. Okay, how does that concept also help? Because on, as you can see on Pracer, okay, guys, we connect tutors with the private with students with the private tutors. So therefore, if you can throw some light on just brief, कि जहाँ पे, how exactly, what was the difference in private tuition vis-a-vis the big coaching? All right. So see, one very basic difference जो all of us realize करते हैं कि private tuition में जो teacher होता है, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा connected होते हो, right? Yeah, The kind of attention you get, the kind of questions you can ask, the number of times, the frequency with which you can ask the questions is definitely very high. तो yeah, conceptual clarity होने के chances यहाँ पे better हैं definitely. Okay. Now see, I cannot advocate कि आप 8 subject के लिए private tuition करो, right? Because to be honest, वो हल्का सा impractical भी है. Okay. yeah, But for a subject that you feel is putting you below the level that you want to achieve, I think private tuition is a very good way, क्योंकि at a little cost you gain a lot of things, right? So to do the very basic math, private tuition की cost, ठीक है, आपको लगती है हल्की सी एक्सपेंसिव है, बट वो आपके 6 महीने बचाती है, ठीक है, right. शायद आपको रैंक ले आती है, एटलीस्ट इन माय केस, ठीक है। Yes, फ्यूचर में आपके सामने एक ऐसा क्रेडेंशियल पैदा हो जाता है जो कोई नहीं ले सकता, AIR, right? Now, for me, private tuitions with Akash sir were definitely about conceptual clarity, but with him, it was mainly about him being a lifeboat in my life, through October and November when I was, derailing from the path, maybe probably taking a wrong sleep schedule, dedicating too much time towards practical subjects and, not the theoretical subjects, running away from theory subjects. running away, right? So he and mom, two lifeboats in my life. For the last 2 months, they were as dedicated towards my paper as me, right? And I'll be very honest, the only reason you'll see your private tutor doing that is when he sees you giving your 100%, right? Yeah, So unless a teacher doesn't see you fighting the battle to win it, you cannot expect that from the teacher themselves too, right? yeah, So I would say ki understand private tuition is not magic, right? It's definitely a tool that will help you do better, perform better, but there is no substitute for your efforts there. got it. Thank you so much for the kind words, Saksham. And I can definitely say that you are one of my best students जिनको मैंने train किया है. Okay, so there definitely, I'm sure कि in the years ahead you will be. I definitely see you as a top CEO of a private equity hedge fund. Definitely, I'm sure that कि उस level तक आप definitely पहुंचने वाले हो सक्षम. Okay, in the years to come, and वो होने वाला ही है definitely. ठीक है. So coming back to the point, Saksham, now that we have discussed about your brief history, how exactly were you as a kid, your CA journey up तक, because अभी तक वो journey complete नहीं हुई है. Okay, Right, it's still halfway down. 3 साल अभी बाकी हैं articleship के. Okay, and I understand you're starting your articleship with EY. Okay, so can you throw some right. light on the articleship that you're going to do, and why did you choose this particular field? Okay, I understand that you are in financial due diligence. Okay, financial services, financial due diligence. So therefore, why exactly did you choose this? What was your thought process कि आप आगे जाके Right. और कुछ पढ़ाई करने वाले हो इसके लिए? Where exactly do you see yourself? वो मेरा question है. All right. So, sorry, sir, just 1 second. Yeah, no problem. Okay. So I'll be very honest, right? जब हमारा इंटर सीए क्लियर होता है, right, and we have to go towards articleship, सब लोग एक ही सवाल पूछते हैं, ऑडिट या टैक्स, okay? बट ये Really? रियलिटी नहीं है. एक सीए की पावर ऑडिट और टैक्स से भी बहुत ज्यादा है, right? So I have entered EY for valuations, right? Okay. Now the pure reason I have entered EY for valuations is कि मुझे पता है फ्यूचर में I want to enter investment banking, hedge funds, private equity, right? It is a field CAs are not typically associated with, but it is definitely a field CAs can conquer, right? So Yeah. my purpose of joining EY for valuations was that it will help me gain an insight into what actually happens when a deal takes place. We read the newspaper headlines, ki, okay, A buys B for 7,000 crores. But my instinct was always कि 7,000 crores का होता क्या है? How do you determine these 7,000 crores? Equity hai, debt hai, what is really happening inside, right? So it's definitely my inquisitiveness
that led me to doing valuations in EY, right? And I'm not saying audit या tax बुरा है. Definitely जिसको future में वो pursue करना है, उसके लिए respectively better होगा, right? Yeah, But don't restrict yourself to only those two fields because CAs today are doing anything and everything. गॉट इट. एंड गाइस, जैसा भी सेक्शन में बताया, एक ऑलरेडी वीडियो ये चैनल के ऊपर अपलोडेड है. इज स्मॉल फर्म, मिड साइज और बिग फोर, विच ऑर्गेनाइजेशन शुड यू ज्वाइन? सो अगर इस पॉइंट में अगर आपको और भी क्वेश्चन रहेंगे, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट video. And coming to the last point, Saksham, as you just rightly said that you see yourself in investment banking, you see yourself, taking up a path which majority CAs are not accustomed to. Okay, वो लोग ये path नहीं लेते हैं. ठीक है, so therefore, do you have plans to study further? And the most important reason I'm asking this question is because कई सारे बच्चों को लगता है कि यार बस मैंने सीए कर लिया ना, बस मेरा लाइफ सेट हो जाएगा. ऐसे केस में मैं वो चीज चेंज करना चाहता हूँ कि जहाँ पे आई वांट टू टेल एवरीबडी एंड दैट कि आज यार सिर्फ पास होने के बाद दैट डज नॉट मीन द फुल स्टॉप. योर लर्निंग शुड नेवर स्टॉप. ओके, वेदर इट इज थ्रू अ प्रोफेशनल डिग्री, वेदर इट इज थ्रू अ न्यू स्किल. आज कोई तुम्हें कोडिंग सीखने के लिए नहीं रोक रहा है, आज कोई तुम्हें फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने के लिए नहीं रोक रहा है, कोई तुम्हें कंटेंट क्रिएशन सीखने के लिए नहीं रोक रहा है. All the tools are available right now free of cost on YouTube. You can use those tools. So Saksham, can you please throw some light? Is CA the ultimate goal for you, or are you going to study further so that you inspire other kids also that भाई बस पढ़ाई जो है वो CA के से ही खत्म नहीं हो जाती, वो यहाँ से स्टार्ट होती है. क्या Saksham? Okay, so कैसे है? For me, definitely CA is a goal, is a dream, right? But if I were to say that I end my dreams after completing CA, I would be lying, right? When I want to look at positions like CEO, CFO, right, or group heads, right, Yeah, I'm not saying CA is not enough, right? CA is definitely enough, okay? But there are some skills as CAs we do not possess, right? Through our journey, there are some areas we probably don't really focus on. So financial management and SFM are two subjects we see in inter and final, right? But have we really taken the depth of those subjects the way we've done for tax? Definitely not, right? no, We've given tax at least in 300 marks, right, for inter and final. But financial management for not even 150 or exactly 150, yeah, right? So for me, pursuing CFA or an MBA, probably from one of the top B schools in the world, would be my dream to complement CA so that when I am looked upon as a candidate in future, I am the whole package. They cannot say उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता. एक CA को law भी आता है, tax भी आता है, right? Audit भी आता है, accounts भी आता है, right? So for me, since I want to enter finance, it is a field CAs are not looked at in expertise. I will be complementing CFA or an MBA. okay, got it. गाइज देख लो भाई, आज रैंकर खुद आपको बोल रहा है कि भाई सीए काफी नहीं है. ओके, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सीए काफी नहीं है, डेफिनेटली वो काफी है. बट अगर आपके एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हैं, ओके, इफ यू सी योर सेल्फ एज अ टॉप हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और अ सीईओ सीएफओ, देन इन दैट केस डेफिनेटली यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट सीए विद अदर डिग्रीज एज वेल. ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हो? सिंपल है, इट यू हैव टू रीच आउट. आज आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई क्वेश्चन है, किसी को समझ में नहीं आएगा. ठीक है, आपको अगर क्वेरीज हैं तो मैं हूँ अवेलेबल हूँ, सक्षम अवेलेबल है. ठीक है, आई विल पोस्ट बोथ ऑफ अस, हम दोनों का लिंक्डइन प्रोफाइल आई विल पोस्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन. मेरा तो टेलीग्राम चैनल का ग्रुप लिंक, ये इंस्टाग्राम का लिंक, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. रीच आउट टू पीपल लाइक अस, बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं. ठीक है, जो आपको गाइड कर देंगे. बट द ओनली पॉइंट इज यू हैव टू रीच आउट. Unless you reach out, it is not possible for you to gain the expertise. You have to choose your friends wisely, you have to choose your circle wisely. Automatically you stay in circle of those people जिनका growth mindset है. Definitely आपका भी growth mindset होगा, and साथ साथ में वो that in that influence of these people will make you successful. So on that note, Saksham, anything One else last that, thing. yeah, anything else that you would like to add? Yeah, I just want to tell all the students, right? Just don't think मैं रैंकर हूं तो मुझे एंजाइटी नहीं हुई, मुझे नर्वसनेस नहीं हुई. ठीक है, मेरे को सेल्फ डाउट नहीं हुआ. ठीक है, सीए एज अ डिग्री brings in us all those factors. ठीक है,
I had opened the results thinking मैं 410 लाऊंगा, मेरा स्कोर 597 था, ठीक है. सेल्फ डाउट होना, नर्वसनेस होना, ठीक है. टू फील लाइक अ लूजर is okay. What you have to remember is a winner decides when this game ends, right? और एक winner और warrior की एक ही mentality होती है, right? The battle doesn't stop till I say it's over, right? So Yeah. go with that mindset, you know. Probably it doesn't sound cool, right? But पूरी दुनिया आपको सलाम देगी, ये mindset आपके पास है तो. नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली पूरी दुनिया सलाम देगी. एंड आई रियली लव दिस लास्ट कोट सक्षम के, जहाँ पे द वॉरियर एंड द विनर, इन दिस केस द वॉर एंड्स ओनली व्हेन यू से इट एंड्स. ओके, नॉट व्हेन द वर्ल्ड इज टेलिंग यू. सो डोंट वरी एट ऑल. द सीए, जितना जितना आई वांट यू गाइस टू एंजॉय दिस सीए जर्नी. इफ यू सी लिटरली ये पूरी जो जर्नी है, दिस जर्नी इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी. ओके, योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, योर डिसिप्लिन दैट यू गेट इन योर लाइफ, द सीए एंटायर सीए जर्नी इज वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव. यहाँ आप टीनेजर से प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाते हो. ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना आपकी पूरी जर्नी में. आई एम श्योर यू गाइज विल ऑल्सो अचीव द सेम feat as Saksham has achieved. And all the very best to all the students. Thank you so much, Saksham, once again for joining us. This was wonderful. I genuinely loved it. एंड मैं यही सोच रहा हूँ कि ये पॉडकास्ट मैं बहुत कंटिन्यू करूँ बहुत सारे लोगों के साथ, ताकि ये सारी लर्निंग्स जो है बहुत सारे लोगों तक मैं पहुंचाऊँ. ओके, so I'm definitely very soon I'm going to call Saksham's mom also. She is a director in EY on the podcast, to get her learnings as well, that how exactly did she reach the top position. So stay tuned for that. And अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना. बहुत मेहनत लगती है यार ऐसे कंटेंट लाने के लिए आप सबके लिए. एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच. कोई भी अगर क्वेश्चन रहेगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो. वील गेट बैक टू यू. थैंक यू गाइस. थैंक यू सक्षम. So थैंक यू सो thank you मच. very much for the opportunity. Thank you, थैंक sir. यू. थैंक यू. थैंक यू. बाय. टेक केयर.